From Tipu Sultan to Aurangzeb, both have been highly divisive figures, both in life and death, while self-appointed secularists have hailed them as freedom fighters and national heroes. For the right wing, they represent tyranny and oppression. Today, Kolhapur has been on the boil due to their bloody legacy, the bloody legacy of Aurangzeb. Police had to resort to a lathi charge to dismiss a mob. But first, let's tell you how it all began. Some minors allegedly put up a social media post with pictures glorifying Aurangzeb. They were promptly detained. Right-wing groups then called for a bandh and held protests outside the police station against the valorization of a tyrant. After protests got over, some miscreants started pelting stones. Police then lathi charge to disperse the mob. कोल्हापुर में कल कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, उसमें 5 लोग थे, उनको डिटेन किया गया था। जो मॉब आया था कल लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, उनको ऑफेंसेस रजिस्टर हम कर रहे हैं। इसी जानकारी देने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब कुछ मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। Now, the Chief Minister has called for peace. His alliance partner, the BJP, has vowed that supporters of Aurangzeb will not be tolerated. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फ़ोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। Now listen to how the ecosystem, which is often backed tyrants like Aurangzeb, are lashing out at the Shinde government over law and order. कि पहली बात तो औरंगजेब एक अलग मसला है और टीपू सुल्तान एक अलग मसला है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी है, ये इतिहास में दर्ज है, कोई झूठ नहीं है। भाजपा जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का अपमान करती है, वो गलत है। नहीं समझो, किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए 2000 में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनटू द होम मिनिस्ट्री इटसेल्फ डायरेक्टली एट द टॉप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इनका इंटेलिजेंस क्या करिए जा रहा है, कितनी चीज़ें, मैं आपको 10 चीज़ें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज डन नथिंग। सो इट्स अ फेलियर ऑफ द मिनिस्ट्री। You can't blame other people and political parties for it. It's high time the ministry owns up to something that they should own up to. देखिए, महाराष्ट्र में जब से ये शिंदे सरकार आई है और भाजपा जो है वो दंगे फैलाना चाहता है। इस तरह से किसी व्हाट्सएप पे और इससे दंगे नहीं होते। कोई औरंगजेब का फोटो लिया और इस तरह से दंगे नहीं हो सकते। ये जो बहुत गलत चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा सीट्स के लिए भाजपा जिस तरह से अपना पार्टनर ढूंढने में पूरा नाकामयाब हुई है, तो ये चाहते हैं कि फिर से हम लोग हिंदू मुस्लिम दंगे करें और सत्ता में आए, लेकिन इसका उनको बहुत ज़बरदस्त कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी।
So who is behind this sudden flaring of tensions over Aurangzeb, over Tipu Sultan? Let me go across to Vishwas Pathak, spokesperson of the BJP, Pankaj Sharma, political analyst, Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena UBT. Let me start with Vishwas Pathak. The allegation is very straight that elections are very close, Mr. Pathak. So the familiar refrain and hate figures of Aurangzeb are being revived to create division between communities. It is very common statement from NCP and Congress to say so. Fact of the matter is that whenever there is a government led by BJP in Maharashtra, these people, and I will call specifically NCP, they become active and ensure that this government is destabilized. After a gap of some 22 months, Maharashtra has seen a stable government under the leadership of Mr. Eknath Shinde and Devendra Fadnavis. Lots of good activities, developmental activities are happening, like coastal road, metro, many other developmental activities. In terms of FDI, Maharashtra has become #1 destination once again. Because of this, NCP cannot see this progress. And if you look at the statements made by their leader, Jitendra Awad, 2 months back, he clearly anticipated, rather informed, that there are going to be riots in this state. And riots are created by whom? People like this NCP, MIM, and all these people. See, who is this Aurangzeb? Who is Tipu Sultan? How they are related to? Why all this kind of things should happen when government of BJP is in power? They did it deliberately, and they are creating this kind of disturbance in state. But Sanjay Raut is saying we are also against Aurangzeb, but the BJP is the one who stands to gain. That is why suddenly all these Aurangzeb posters, Aurangzeb status messages are being put. Now, for Sanjay Raut, Sharad Pawar is the ultimate leader. So whatever Pawar will say, he will go by that thing. They are no more Shiv Sainiks. They are no more Hindutva-wadi. They have lost everything. Now, I remind Sanjay Raut only, in Aurangabad, when this Siddiqui, MIM leader, as well as the MIM's MLA and MPs, they paid tribute to Aurangzeb. For what? At that time, MVA government was in power and I did not bother to say anything about that. Okay, किशोर तिवारी जी, ये शैडो बॉक्सिंग चल रही है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अचानक से महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पदमजा जी, अभी तो सिचुएशन गंभीर ही है, क्योंकि कल रात को जब संकेत मिले कि लोग यह सुबह फिर से आएंगे या 10 संगठनों ने जब कोल्हापुर बंद रखा था, तो आज सुबह जब आप देखते हो तो मुझे मालूम पड़ा है कि करीबन 25,000 लोग जमा हो गए थे। तो 25,000 लोग जमा हुए, उनके हाथ में प्लाई कार्ड थे जिसमें लव जिहाद भी लगा हुआ था। तो एक ऑर्गेनाइज ढंग से वो हुआ था, लेकिन वहां के जो महेंद्र पंडित है वो लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया और रात को भी पत्थर फेंके, आज भी पत्थर फेंके। तो मैं कह रहा हूं कि विश्वास पाठक जी अगर जानते हैं कि यह कोई अपोजिशन करवा रहा है तो वो इंक्वायरी कर ले और उन लीडरों पे भी कार्रवाई करे जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, संभाजी नगर में हुआ और अमरावती में हुआ, उसके बाद आप देखो अहिल्या नगर या अहमदनगर जो पुराना है उसमें भी ऐसा ही हुआ कि औरंगजेब का प्लाई कार्ड लेके आ गए। अब औरंगजेब आक्रांत थे, औरंगजेब ये हिंदू विरोधी थे और औरंगजेब कोई भगवान ने भेजे वाले नहीं थे। कोई भगवान ने भेजे वाला आदमी अपने पिताजी और भाई को मानता है। तो ये सब चीजें साफ सतुरी है कि यह औरंगजेब या टीपू सुल्तान का भूत किस लिए आया है। ये लॉ एंड ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट करता है। एक मिनट में एक बात बता देता हूं। एक बात आप अपने पूरी कीजिए। जब भी ऐसी बात आती है तो वी आर वाचिंग द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल, वी विल सी दैट ऑल culprits are booked and we will control the situation। ये देवेंद्र जी बोलते हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है और दंगा हो गया। अगर कांग्रेस MIM दंगे भड़का रही है तो सरकार क्या कर रही है? विश्वास पाठक हाँ, जेल में डालिए। होम मिनिस्टर who is also deputy chief minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis, he has already set up inquiry. Now inquiry is there, we will investigate
how it all happened. We'll go back to 3 months, 4 months back, how Mr. Awad predicted this kind of dangal to happen. Everything is a matter of inquiry, and nobody is going to be spared. All will be given very befitting. पदमजा, should I ask one thing? हाँ बताइए किशोर तिवारी। नहीं पदमजा, देखो अभी मैंने कोल्हापुर में बात भी की। वो प्रोवोकेशन तो करने वाले अलग थे, लेकिन नाइंसाफ लोगों को बहुत पुलिस ने मारा और सड़क से जाने वालों को भी बहुत मारा, औरतों को भी मारा। अब इन्होंने उनको ही अरेस्ट किया और वो नाबालिग बच्चे कल जिन्होंने स्टेटस लगाया था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। स्टेटस लगाया था तो स्टेटस लगाया उन्होंने नहीं है, लेकिन ये औरंगजेब को रंगीले तरीके से बड़े भगवान के भेजे हुए मसीहा के तरफ से प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? और ये सब चीजें महाराष्ट्र में विकास के प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, बेरोजगार के प्रश्न है। Okay, Vishwas Pathak, before Vishwas Pathak answers, let me bring in Pankaj Sharma as well. Is this a coincidence or is this a conspiracy, or as some would say a sanyog or a prayog, that suddenly it happens in Ahmednagar, it happens in Kolhapur, from Tipu Sultan to Aurangzeb, everyone suddenly is being glorified. Why? It's a failure of this government. Wait, Mr. Pathak, before you respond, go on, Mr. Pankaj Sharma. See, I am saying, is it difficult to understand that why a Mughal emperor died more than 300 years ago has become a hot topic of debate in our country in recent months? It is because the elections are nearing. It is because of his fact that the hardened anti-social elements have become so active on social media, and equally hardcore fundamentalists are running on to the streets. See, I say, bring a bill in the parliament if someone wants to erase the Mughal history from the Indian history, the name of Aurangzeb from Indian history, then please bring a bill in the parliament that all the memorials of Mughal era be destroyed, all the references about Mughal period be deleted from Indian history books, get it passed, implement it, and settle the matter for once and all. Why to raise it before every election to achieve your purpose of taking political advantage? No, but how are you so sure that the BJP is doing it? Their allegation is that the Congress, NCP and AIMIM are hand in hand. They are doing it. And the fact still remains that in Ahmednagar, it was an AIMIM leader who was carrying posters of Aurangzeb. You are right. You are right. See, everyone knows that it is whom it is important to unnecessarily disturb the social harmony at the time of election by shouting Aurangzeb, Aurangzeb, Tipu Sultan. I mean, thousands of people cannot reach to the streets unless it is organized. And only an organization can do it. I mean, a structured organization like some political party or some cultural organization, so-called cultural organization only can organize these sorts of things. Okay, respond, Mr. Pathak. This is organized by you. People couldn't have gathered unless you wanted them to gather. That's the argument of Mr. Sharma. See, as far as BJP is concerned, we do not eye on elections. Our steps are always taken in the interest of state, in the interest of nation, be it Article 370, be it Article 35, or many more things. So we do not go into that. GST, demonetization, everything. Whatever is in the interest of state or country, we do that, and therefore we are being re-elected again and again. This particular matter, you look at these statements made by Jitendra Awad, NCP, MIM, and look at the series of events happening. It is in Sambhajinagar, then Ahmednagar, Nasik, and now this one, Kolhapur. Mr. Awad has categorically mentioned that in coming months, Maharashtra is going to witness riots. Okay, Jitendra Awad seemed to be predicting the future. Mr. Sharma, and then Kishore Tiwari. See, if my Prime Minister gives long speech in Varanasi, mentioning in detail how Aurangzeb had tried to change our civilization by using his sword, he has every right to do that. But why is he doing it? Everyone knows there is a subtle message in this. So, I mean, as I have said, you know, how can you like someone who came to the throne after imprisoning his own father and having his own brother killed? So, ill will against Aurangzeb can be understood.
And I am not surely against it if someone desires to erase the name of Aurangzeb from Indian history. But why to use it for your political gains before every election? Why all these things happen when there are elections? That could equally be asked of you also, sir, because you are also fighting elections. Congress is also fighting elections. So equally the Congress can be asked, why is it happening before elections? Both parties stand to gain, right? Or the IMIM. Everyone knows who is involved in this, who is behind this. That is a very generic argument. Kishore Tiwari, everyone knows is hardly an argument. You know, you ask somebody in the BJP, they will say everyone knows that Jitendra Awad was behind it, or he threatened that there's going to be riots. Everyone knows it's not any kind of argument. You also know it. No, I don't know it. The police doesn't know it. How will I know? Padamja. Yeah, Kishore Tiwari. Yeah, Padamja. The Hindu organization organized the protest. And from last 7 days, there was a love jihad case in Kolhapur. Then multicolor placards were also carried. And the speeches given by them were mostly related to the love jihad. And the thing is that if the 20,000 or 30,000 people gathered in the morning to a Shivaji Square, and Vishwas Pathak is giving the credit to the Jitendra Award for organizing this protest, then it is a horrible thing. In fact, there are input that the organization related to the BJP are behind the protest. But Mahendra Pandit has acted excessively and unnecessarily beaten the people, and he failed to control the situation. I demand the failure of the law and order should be admitted somewhere, and collector and the DSP should be sacked, and Deputy CM should take a responsibility of the incident, because otherwise he becomes serious, Vishwas. Well, definitely accountability should be fixed about why violence was allowed to break out after a bandh was called by right-wing organizations in Kolhapur, and equally it should also be investigated who are these malicious elements who are trying to provoke people by trying to glorify or revive the memories of people like Aurangzeb and Tipu Sultan. Thanks very much all gentlemen for joining me. That's it then from me on this edition of The Nation Wants to Know. I'll see you next at 10 on the News Hour Agenda.